फिर इस पे आगे आप लोग प्रेजेंटेशन भी अगर कोई दे रहा है तो इट विल बिकम मोर क्लियर। देखिए, टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है करिकुलम की डेवलपमेंट के प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि टीचर इज द एंड यूजर। ये उस दिन भी हमारे प्रेजेंटेशन में किसी ने किसकी प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने बात की थी। तो शी एक्चुअली नोस कि क्या जरूरी है बच्चों के लिए। शी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि बच्चों का क्या बच्चों की क्या नीड्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट, किस चीज में वो इंटरेस्टेड है। उसके हिसाब से उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। And they cannot be taken for granted and or viewed simply as skilled technicians. Basically जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोचते हैं कि टीचर्स तो बस टेक्नीशियंस हैं जो इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर their input is very, very important. It is very important because they are the authority who basically implements. अगर उनकी रेडीनेस नहीं होगी तो करिकुलम चेंज कभी आएगा ही नहीं। करिकुलम कभी जितना भी अच्छा प्लान कर ले उसमें वो जील आएगी ही नहीं। So it is important that they are the active participants. Their beliefs, their attitudes, perceptions are taken into account when we basically develop a curriculum or plan a curriculum. And they should not be like taken for granted, and they should not be taken as the person who just implements and translates the curriculum into the classrooms, but they are the ones who ultimately who can basically decide the fate of the curriculum, because वो जितने अच्छे से उसको implement करेंगे इतना अच्छा आपके curriculum के रिजल्ट्स आएंगे। आप जितना भी अच्छे करिकुलम पॉलिसी मेकर्स बना लें, लेकिन अगर टीचर्स आर नॉट इन ऑन बोर्ड, देन इट कैन एक्चुअली बी नेवर अ सक्सेस। ठीक है। वैसे में ज़ैनब, मुझे एक जी। बात पूछनी है। ये जो हमारे करिकुलम फ्रेमवर्कर्स हैं जो बनाते हैं, क्या कभी ये टीचर्स को मतलब कंसल्ट करते हैं while making any change or introducing anything देखिए, while अब adding? अगर आप एसएनसी की बात करें तो यस, टीचर्स वर इन्वॉल्व इनटू इट। आई एम नॉट श्योर कि किस लेवल के टीचर्स, इसकी मैं बात नहीं करूंगी इस वक्त, लेकिन टीचर्स वर इन्वॉल्व। एंड इवन अगर आपने देखा हो तो एसएनसी में एक इनपुट के लिए बाकायदा पूरी एक वेव चली थी कि टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स वो अपना इनपुट दें। और अभी भी आई थिंक वो चल रहा है कि अगर आप अपना इनपुट देना चाह रहे हो तो दे हैव क्रिएटेड अ फोरम जहाँ पे जाके आप अपना इनपुट दे सकते हैं। So yes, now they have actually like kind of पहले के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अब this time they have involved the teachers. ठीक है। अब वो इन्वॉल्वमेंट किस लेवल के टीचर की है अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। Are we clear? Have I answered your question? Yes, no? हाँ, यस। Okay. हम लोगों को भी वैसे में ज़ैनब इंक्लूड कर ले। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को भेजा भी था वो, कि जिसमें उन्होंने आई रिमेम्बर आई हैव सेंड दिस ऑन ग्रुप। आई रीशेयर अगेन, कि जिसमें उन्होंने दे हैव आस्क्ड द एजुकेटर्स एंड द टीचर्स टू बेसिकली गिव देयर इनपुट ऑन एसएनसी। सो आई विल जस्ट शेयर दैट विद यू ऑल। ठीक है, ताकि आप लोग अपना चाहे तो यू कैन ईमेल इट टू देम। ज़ैनब, जो आपने असाइनमेंट दिया था, दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल या व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑन द सिलेबस। तो इतनी सारी चीजें थी जो हमने खुद पॉइंट आउट करी ग्रेड 5 के सिलेबस में, बीइंग अ मैथ्स पर्सन, कि ये चीजें वो इम्प्लीमेंट करते इस तरह से तो बहुत अच्छा हो सकता था। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर द असाइनमेंट, दैट वाज रियली वेरी नीडेड वन, and it really increases our knowledge as well. Thank you so much. I think the purpose of this assignment was this only, so that we at least go through our curriculums once, और हम देख सके कि उसमें क्या गैप्स हैं और क्या बेहतरी इसमें लाई जा सकती है। तो आई थिंक दैट वाज द होल आइडिया अबाउट इट। एंड थैंक यू फॉर योर kind words and review, Simi. I I think hope this was the only assignment in which we have to do analytical reasoning, and we cannot copy and paste anything. Yeah. So I think the severity, the thing is that basically if I give you any topic just to prepare, yeah, जैसे presentations में है,
तो आई थिंक वो उस तरह के असाइनमेंट्स तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन किसी कोर्स में जब तक आप उस कोर्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल उस तक नहीं पहुंचते तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग थिंग्स. So I hope that you all have learned something out of that, and you would be able to bring certain change in your own contexts with your learning. Basically, that was the whole point. चलिए तो आगे चलते हैं. Basically, I know that it was a very tough assignment. It was not that easy, and it must have given you all a hard time. But yet, the whole purpose is that we learn through it. That is very important, right? Okay. Yes, Saman, you are right that they have given credits. They do have a list of teachers and people who have actually been involved in development of the curriculum. I think this is also right. Or even there's a lot of people who have been involved this time. Even they've called for a very open kind of input. Okay. So there's a large sum of money that is involved in curriculum planning, but फिर भी आप देखते हैं कि जब implement हो रहा होता है तो वो fail हो जाता है. तो reason यही है, the main reason for the failure is the lack of understanding of the culture of school by both experts and educators, externally and internally. तो जब तक आप teachers को involve नहीं करेंगे, आपको school का internal culture, internal उनके problems के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो आप अच्छा करिकुलम चेंज, जितना भी अच्छा डॉक्यूमेंट बना लें, वो सारे पैसे जो आप उसमें लगाते हैं, जो बजट आप उसमें लगाते हैं, वो सब फेल हो जाता है. बिकॉज द टीचर्स नो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ द स्कूल बेसिकली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वॉल्व द टीचर्स. ठीक है. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे यही बात कही गई कि पॉलिसी मेकर्स जो है वो टीचर्स को अक्सर सिर्फ टेक्नीशियंस की तरह देखते हैं and do not include them into the development process. But उसके वही नुकसानात है कि आप जितना भी अच्छा करिकुलम बना लें, वो उसका वो फायदा नहीं हो पाता. तो why are the teachers important in the implementation of curriculum? Because they are the ones who basically take it to the end user. So उनको इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज दे आर द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ. देखिए, टीचर के जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि वो करिकुलम प्लानिंग का हिस्सा हो, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा हो, और फिर वो रिफ्लेक्शन करे, क्योंकि उसके रिफ्लेक्शन के ऊपर फिर वापस करिकुलम में चेंजेस लाई जाएंगी. Do you understand? So these are the three important role of a teacher, that she's a part of the planning, she implements, and then she reflects. ठीक है. यस मैम. सो अगर वो रिफ्लेक्शन करेंगे अच्छे से, तो ऑब्वियसली फिर उनके रिफ्लेक्शन पे फर्दर चेंजेस लाई जाएंगी. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट their experience, their competence is very important for the implementation of curriculum in the classroom, because curriculum किसी भी classroom के लिए ही बनाया जाता है. It's not just for the documentation. ठीक है. और ये हैडिंगटन जो है वो कहते हैं कि वो Handel and Harrington also stress the central role of teachers in implementing the curriculum and call on policymakers to take teachers' attitude and perceptions into account. Their perception, their attitude, their willingness for the curriculum is very important. If they are not willing to implement, obviously they won't be able to bring, we won't be able to basically bring that change that we want to. A teacher does more than just implement curriculum, while curriculum specialists, administrators, and outside education companies spend countless hours in developing curriculum development. It is the teacher who know best what the curriculum should look like. After all, they work directly with the students who are meant to benefit from the curriculum. In order to create strong curriculum, teachers must play an integral role in every step of the process, right? Teachers know their students better than others involved in the curriculum process. While the state often dictates the skills covered by the curriculum, a teacher can provide insight into types of material, activities, and specific skills that need to be included. Teachers from multiple grade levels may collaborate to identify skills students need at each level and ensure that curriculum adequately
prepare students to advance to the next grade level. So obviously they know कि इस लेवल पे कितनी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, फिर आगे जाने के लिए क्या जरूरत है, तो कितनी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए हर लेवल पे. सो टीचर एग्जैक्टली नोस कि पिछले क्लास 6 में क्या होगा जिसके बेसिस पे 7 में पढ़ाना आसान होगा. Do you understand? Then she knows कि 7 या 8 में ये चीजें हो जाएंगी तो 9 10 में इतना बैकग्राउंड होगा तो बाकी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ाना आसान होगा. तो she exactly knows where to tap in. जो करिकुलम डेवलपर्स को शायद या एजुकेटर्स को ना पता हो क्योंकि वो डायरेक्टली बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और उनको पता होता है टीचर्स को कि हर लेवल पे बच्चों की क्या नीड है, कितना कॉन्क्रीट उनको हमें देना चाहिए. सो आई थिंक टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इनटू द करिकुलम क्रिएशन प्रोसेस बिकॉज उनके इनपुट से एक अच्छा करिकुलम बन सकता है. So teachers' role in the creation of the curriculum, teacher can gauge whether the activity will fit into specified time frame and engage students. Teachers should be allowed to provide input during the creation stage. As teachers provide input, they will gain ownership in the product and feel more confident that the curriculum was created with their concern and the need of their students in mind. समझ रहे हैं आप लोग कि क्या है कि अगर टीचर को आप करिकुलम क्रिएशन का हिस्सा बनाएं तो बच्चे जो टीचर जो है वो खुद ओनरशिप लेगा उस करिकुलम की और फिर वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा जील के साथ इम्प्लीमेंट भी करेगा क्योंकि वो कहेगा कि हाँ ये मैंने खुद बनाया तो आई नो के यू नो दैट विल कम इन एंड देन टीचर वुड आल्सो नो कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो उस टाइम फ्रेम के लिए सही भी है या नहीं. यस मैम जो स्किल बैक मॉडल जो है करिकुलम डेवलपमेंट उनका भी यही नजरिया था, उनका भी यही मानना था कि टीचर को इन्वॉल्व अगर किया जाए ना तो ज्यादा बेस्ट होता है एक करिकुलम की. और उन्होंने क्लेम भी इसी बिहाफ पे किया था कि ये चीजें जरूर शामिल की जाएं वेरी ट्रू किसी भी करिकुलम को वेरी ट्रू. क्योंकि देखिए जो एंड यूजर है अगर उसकी राय नहीं ली जाएगी तो ऑब्वियसली टीचर भी कहेगा कि भाई इसमें तो मेरी राय ही नहीं है, तो वो ओनरशिप लेता ही नहीं है. जब आप कोई चीज खुद डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो एंथुसियाज्म लेवल होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है. तो टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज द वन हु एक्चुअली टेक्स इट टू द स्टूडेंट्स. तो अगर उसका इनपुट नहीं होगा इसके अंदर तो ऑब्वियसली वो यू वोंट बी एबल टू नो कि व्हाट इज द बेसिक गैप्स. आपको करिकुलम के जो गैप्स होंगे वो भी टीचर ही बता सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता. बिकॉज व्हेन दे आर टीचिंग दे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द गैप्स. ठीक है. Okay, so when the teacher does not if she is not the part of the curriculum development process, so obviously फिर वो she would not be able to understand the standards of the curriculum and then वो effective implementation नहीं होगी. ठीक है. Let's go to the next point. Now the reflection of the teacher is also very important. So we said the teacher should be involved in planning. Teacher should be involved in she is the one who implements. Then she should be also involved in the creation process and then her reflection. That after she teaches the the whole curriculum, uska reflection us pure curriculum ke bare mein should be documented and then it should be basically used to further make amendments in the curriculum. So it is very important that the teacher reflects on the curriculum. They need to be taught to reflect. They need to be made it needs to be made compulsory that she journals it. She documents her reflection. Maybe it can be taken through surveys, interviews. फिर उसके बाद उन सारे रिफ्लेक्शंस को कलेक्ट करके दोबारा करिकुलम में जो भी चीजें हैं उसको चेंजेस की जाए. अच्छा, सेटबैक क्या हो सकता है? एक शॉर्टकमिंग भी है जब टीचर्स को आप करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर टीचर का अपना प्रायर नॉलेज या उसका अपना बिलीफ सिस्टम या उसका अपना एक्सपीरियंस जो है वो इस लेवल का नहीं है तो और आप उसकी राय ले लें तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है, तो ये वाला हिसाब हो जाता है. तो अगर वो टीचर उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो ये बिल्कुल ही फिट एग्जाम्पल है पाकिस्तान में जिस तरह टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया है करिकुलम डेवलपमेंट. साल से जो एक्सपीरियंस है उनको सिर्फ करें.
जी बिल्कुल। देखिए सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं है, दे शुड हैव सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज आल्सो, कि या इतना इतना लेवल ऑफ उनका बैचलर्स हो या एटलीस्ट मास्टर्स हो या इतने साल का एक्सपीरियंस हो, क्लासरूम में ट्रेंड है या नहीं है। तो बहुत सारे बेंचमार्क सेट करने की जरूरत है टू बेसिकली अवॉइड दिस डैमेज टू हैपन। Ms. Anab, I